Hello everyone. On behalf of the Women and Young Members Excellence Committee of ICI, extend a warm welcome to all of you to the Sky High Symposium series. It's a platform created by the committee to share the technical updates, enhance non-technical skills, and encourage our members to confidently express themselves in public forum. This initiative aims to empower and inspire our members to step forward and make the most of their abilities. Our chairperson of WYMAC committee, CA Priti Savlaji, who is also a chairperson of the Sustainability Reporting Standard Board and vice chairperson of Valuation Standard Board for the year 23-24. Our vice chairperson, CA Abhay Jhajarji, who is also chairperson of Commercial Laws, Economic Advisory and NPO Cooperative, and he is a vice chairperson of Accounting Standard Board as well. This Wednesday series program has been thoughtfully designed to nurture the growth and development of our cherished women and young members. Sky High Symposium is not just about technical updates, it's a platform to cultivate non technical skills and empower our members to shine confidently on the public stage. Today's session holds to the promise of enlightenment as we explore the realm of today's topic uh, on the annual returns and our first speaker is C. Ruchika Sharma, a true authority in that field, graces us with their insights. It's my privilege to introduce our today's speaker, C. A. Ruchika Sharma. She is a highly knowledgeable chartered accountant having an in-depth understanding of GST. She is highly enthusiastic person. She has a clear conceptual clarity on the topic of GST. She has achieved a title of the best article of the year in her articleship days. She has a very good exposure of the same topic in her articleship. Recently, she has joined Bartley by Purohit firm and worked on many assignments in terms of compliance, litigation, and advisory in the field of indirect taxation, where she showcased her knowledge, analytical skills, and she possesses very good presentation skills. She has also participated in various seminars, webinars on GST and is currently studying in detail in order to get more and more conceptual clarity and have also started posting on same topics to spread the knowledge. She is also subject matter expert of accounts in a multinational company. With this brief introduction, let us start with the session. I welcome you and I hand over to you, Ms. Rishika Sharma. Thank Uh, you. Thank you, Shreya. So myself, CA Ruchika Sharma, and my today's topic is in common mistakes in annual return and professional opportunities thereof. I would be sharing a PPT on the same. Okay, so my topic is common mistakes in annual return and professional opportunities thereof. So in order to first understand about the common mistakes, we should go ahead and understand about the annual return. What exactly annual return is? Is it a rectification statement or a reconciliation statement? We should understand first about the annual return. So initially, to start with GSTR 9, we will be looking on 4 areas, meaning applicability, due dates, and penalty. Going ahead, meaning it is an annual return to be filed once for each financial year. That is, GSTR 9 is not a rectification statement. People do consider it as a rectification statement. It is basically a declaration which is filed on a yearly basis. That is what all the supplies, that is, be it outward supplies or inward supplies, you declare during a financial year are disclosed in GSTR 9, which you file in GSTR 1 and 3B, are all summed up, and a summary is disclosed in GSTR 9 regarding the same. And for GSTR 9, GSTR 1 and 3B are compulsorily to be filed by a taxpayer in order to file GSTR 9. It is an annual statement which is filed on a yearly basis, and it is filed by the registered taxpayers, including SEZ units and SEZ developers.
and they are required to furnish, as I said earlier also, the details of sales, purchases, export, import, the tax credit, the refund claimed, or any paid demand paid or created, etc. stuff. Also, it is filed by a person who is a normal taxpayer, that is, including SEZ unit and developer, and also a person who has withdrawn from composition scheme to regular tax scheme. We can take an example. For example, for financial year 22-23, if a person was registered under composition tax scheme, and like you can say turnover 1.5 crores का exceed हो गया, and that person came under regular tax scheme, shifted from composition to regular due to the turnover criteria. So that person is required to file GSTR 9 for the financial year 22-23 and not GSTR 9A, which is applicable for composition taxpayers. And also, annual return is not required to be filed by casual taxpayers and NRTPs, that is non-residential taxable persons, as they take registration valid for maximum, I guess, 90 days, and they are not required to file any annual statement. Also, ISDs, input service distributors, and OIDAR service providers are not required to file annual returns. Also, now, earlier GSTR 9 was compulsorily to be filed by each taxpayer on whom it is applicable. Now it has become turnover based. Like if a taxpayer is having turnover up to rupees 2 crores, then GSTR 9 is optional. And if the turnover exceeds 2 crore in any financial year, GSTR 9 becomes applicable for that financial year. लाइक यू कैन टेक एन एग्जांपल, अगर एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में 2 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर है, तो उसी फाइनेंशियल ईयर के लिए 9 एप्लीकेबल है, एंड इफ सब्सिक्वेंटली नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में अगर टर्नओवर एक्सीड नहीं हो रहा है, तो वो फाइनेंशियल ईयर में जीएसटीआर 9 एप्लीकेबल नहीं होगा. इट इज नॉट अ कंपल्शन कि एक ईयर में जीएसटीआर 9 एप्लीकेबल है तो नेक्स्ट ईयर में भी जीएसटीआर 9 एप्लीकेबल होगा. इट इज प्योरली टर्नओवर बेस्ड. If your turnover is up to 2 crores, GSTR 9 will not be applicable. And if your turnover exceeds 2 crores, then GSTR 9 is applicable. And for turnover purposes, we take aggregate value of all the taxable supplies, except for reverse charge basis. We also include exempt supplies, interstate supplies of persons having the same PAN number. That is, it is computed on all India basis and not state-wise. And if it becomes applicable all India basis, the GSTR 9 is filed state-wise, like GSTN number-wise. If an entity is having like 10 registrations in 10 different states, the turnover will be considered for the overall 10 branches, and GSTN 9 will be filed separately for 10 branches if they are having separate GSTN numbers. And also people tend to have doubt that like income tax returns, whether we can revise form GSTR 9 or not. So there is no concept of revision in GST. Once you have filed the return, you cannot revise form GSTR 9 or a 9C. Once filed is the final submission, and then you cannot revise that form. Going ahead with the due date, for GSTR 9, for currently 22-23, it is 31st December. It is 31st December, and if you don't file as on the due date, like before the due date, if you don't file and due date exceed ho gaya, so penalty shall be applicable, which will be on the basis of turnover. That is, if you are having turnover up to rupees 5 crores, then a minimum of 25 each for CGST and SGST, that is a total of 50 per day, will be applicable. That is minimum, and it will be subject to maximum of 0.04% of turnover in a state or union territory. That is 0.02% for CGST and 0.02% for SGST. Collectively, it will be 0.04%. And for taxpayers having turnover exceeding 5 crores, they will be liable to pay a penalty of minimum 100 rupees per day, which is 50 for CGST, 50 for SGST, which shall also be subject to maximum of 0.04% of turnover.
turnover, which shall be 0.02 under CGST and 0.02% under SGST. So this is all about the meaning, applicability, duty and penalty for GSTR 9, which is the basic part for that. Going ahead with the difference, people were having when the GSTR 9 and 9C were introduced, a lot of people were having confusions for reporting requirements in 9 and 9C. That is what all things are to be corrected or what you can say uploaded in 9 or 9C. What are the requirements for the same? So we'll study about that. So basically, Form GSTR 9 is required to be filed by every person registered as normal taxpayer based on the turnover criteria, which I explained earlier. Earlier, as it was compulsorily applicable, now it has become turnover based. So GSTR 9 is required to be filed by those taxpayers who satisfy the turnover criteria. And sorry, and Form GSTR 9C is required to be filed. That is also turnover based, but it is to be certified by a chartered accountant or a cost accountant. And it also includes a reconciliation, which is done with the audited accounts, and also a copy of audited annual accounts is to be submitted, whereas 9 is totally the disclosure part of all the returns what you have filed during the financial year, whereas 9C is more of like kind of audit, the returns which you file, what are the differences to be reported, and it is to be certified by a chartered accountant or a cost accountant, and it is applicable when your turnover exceeds 5 crores. Going ahead, as I said, GSTR 9 is merely a consolidation of GST returns which are filed during the financial year, and GSTR 9C is a statement which is certified by the chartered accountant or a cost accountant. And also in GSTR 9, there are no annexures to be attached. That is, you file either through online mode or offline mode, and there are no such annexures to be attached. You just need to compile the pre-requirements, what are there, the summary, and then perform reconciliation, prepare the workings for your reference and not to be submitted for GSTR 9. And whereas in case of 9C, you are required to submit your audited financial statements, which are compulsory to be submitted. And the format of the return, the consolidated summary. This is the same, the consolidated summary details of the turnover, ITC, and tax paid. All the outward, inward, as well as what tax you have paid for a particular financial year, the late fees, penalty, HSNY summary, these all things are disclosed in 9. And for 9C, if you're having any difference in 9 and your books, that difference is to be reported. And there is no HSNY summary or so in 9C. And this will be certified by a chartered accountant or a cost accountant. If a GST audit, that is 9, is applicable. So ahead, what all are the prerequisites you should require before filing GSTR 9? मतलब अगर आप GSTR 9 फाइल करने बैठ रहे हो तो उसके पहले आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए. Without that documents, they are not required to be submitted, but just for your reference, when you are starting to file GSTR 9, you should be aware of all the working during the year. You should download the summary, GSTR 1 summary, which is there on the website under the annual return tab, the GSTR 3B summary, the GSTR 2A summary, and then prepare these statements, which I have mentioned here. The reconciliation statement of outward supplies. Basically, you should reconcile your GSTR 1 and 3, which also states that what all sales and stuff you had relating to outward supplies, what you have reported in GSTR 1 needs to be reconciled with what you have paid in GSTR 3B. Sometimes there are cases where एक invoice GSTR 3B में submit हो गया but GSTR 3B में pay नहीं हुआ. And there are also cases where GSTR 1 में नहीं गया but 3B में आपने pay कर दिया है. तो
you should be aware of those differences and stuff. So you should first reconcile your 1 and 3B on the outward part in respect of outward supplies, and also books of accounts with GSTR1. That is what all incomes are getting reflected in your audited books of accounts, and not mere rough books of accounts. You should compile the audited books of accounts. You should compare the audited books of accounts with the GSTR1 income and reconcile both of them. If there are any differences, you should figure it out and correct it. At the time of GSTR 9, it is not preferred to be, it is not just a, what you can say, it is not a rectification statement, but you should be aware, you should conduct these reconciliations on a monthly basis or once in 2 months, because what will happen, you have a time limit. Like for financial year 20 to 23, there is a time limit to claim or to reverse or to update any invoice in the subsequent financial year. If you don't do that, you have to face the consequences of the same. There is an option to rectify the mistake in GSTR 9, but it is not preferable to rectify that mistake in 9. You should rectify it uh, prior only. Before only you should rectify it and then file GSTR 9. Then reconciliation statement of on inward part, reconciliation with books of accounts and 3B. What credit have you, what bills or what all credit you have recorded in books of accounts, and what credit you have claimed in GSTR 3B, whether be it reversal or availment, the both should tally. If you're having 100 rupees credit in books of accounts and 50 rupees reversal, then the same should tally with GSTR 3B. And since 2B has been introduced, so your GSTR 3B, the credit which you claim monthly, should tally with GSTR 2B monthly. In reality, these reconciliations of GSTR 3B and 2B should be done on a monthly basis. Reason being, if a credit is not like available in GSTR and you're claiming it, what if it won't be available in further months also? So you should conduct these reconciliation on a monthly basis so that no invoice is left out in this regard, and you can just rectify your mistake in the subsequent financial year, but up to the specified period which was notified by the circular. Up to that period you should rectify your mistake, otherwise you would face some consequences. And in 9 as well. Yeah, and also you should check once the compliance in respect of reversal and workings accordingly. So, going ahead with this, you should also check the compliance in respect of reversal. The rule 42 and 43 are more like used by people. The more the formula for rule 42 and 43, people tend to have confusions about that. So you should check the compliance part in case of reversals, and what all workings have you prepared for GSTR 3B and 1 also. It should get tally with your books of accounts and the data to be uploaded in the return, and the data uploaded in the return which is already filed. And you should also prepare the reconciliation and verification in respect of RCM, uh, like to check whether the accounting treatment is correct or not. So you should be handy with all these reconciliations before starting with GSTR 9 on a yearly basis. You should also have your audited books of accounts at that time, the audited financials, all the tax plans which you have paid, and you should also have the HN-wise details, because HN-wise details in respect of inward supplies is not mandatory. That table is optional. However, for outward supplies, it is mandatory. So you should be handy with the HSN-wise details as well. You should
what do you say, every GSTR 1 जो monthly file होता है उसमें report होना चाहिए HSN wise details in respect of outward supplies. And yeah, going ahead, we will see which tables get auto-populated data in respect of outward supplies. Table 4, where the details of advances inward and outward supplies. Inward basically relating to RCM, which is made during the financial year on which tax is payable. The table 4 represents all the part of outward supply. Just a second. So we will now see what all data gets auto-populated in GSTR 9 in respect of outward supplies. Under table 4 and table 5, which represents the data which was filed in GSTR 1 in respect of outward supplies. In table 4, see the details of advances inward. Inward is relating to RCM, which has a separate row in that, and outward supplies during the financial year on which tax is payable. It is basically that part on which actual tax is payable, and it does not include the exports without payment of tax, nil rated, exempt, non-GST. They all are reported in table 5. Table 4 purely represents the supplies, the outward supplies on which tax is payable, and table 5 represents purely the outward supplies on which no tax is payable. And you can edit these data. This gets auto-populated from GSTR 1. But if you wish to edit, like to rectify any of your mistake, which you have committed in that financial year, so you can edit these rows and rectify the same. So I would like to share some information about this notification, which was introduced. So basically, table 10 and 11 represents table 10 mein, the supplies which you have reported in the subsequent financial year up to 30th November. So earlier it was stated September 2022. Now the maximum date is 30th November, which means the October's return, the due date of October's return basically. And if you wish to file the return late, that is, agar return late file kar rahe ho, then also it is maximum 30th November. Tab tak ke you can rectify. After that you cannot rectify. That is, you can say, for example, 22-23. For 22-23 till November, you can rectify any of your mistake before filing annual return, not after filing annual return. Before filing annual return till 30th November, what all you have, I will discuss it later. The mistakes like GSTR 1 में invoice है, पर GSTR 3 भी में payment नहीं हुआ है. 1 में इनवॉइस नहीं गया है बट 3 में पेमेंट हो गया है, या दोनों में से ओमिट हो गया है. तो all these things are reported in table 10 and 11 of GSTR 9, which will be considered till maximum 30th November. 30th November के बाद में you cannot rectify in any monthly return. You need to then rectify it in GSTR 9. So firstly, you will try to rectify it in the subsequent month itself. If not, then maximum 30th November तक ही. लेकिन अगर तभी भी नहीं हुआ तो annual return में rectify करना पड़ेगा फिर. So now we will first see the Excel sheet where so these are the tables in respect of outward supplies. Table number 4, where 4 from 4A till 4G, these tables are mandatory. And 4A represents supplies made to unregistered persons. Unregistered persons are basically B2C supplies, but it should be net of credit notes and debit notes.
अंडर दीज इसके जो क्रेडिट नोट और डेबिट नोट है इन रिस्पेक्ट ऑफ B2C वो अलग से कहीं पे भी डिस्क्लोज नहीं होंगे, वो यहाँ पे ही नेट ऑफ करके शो करना है. And for 4B, 4B represents the supplies made to registered persons, B2B. And in this case, B2B supplies जो outward है वो, but इस केस में जो क्रेडिट नोट और डेबिट नोट है इसका अलग से डिस्क्लोजर है, इसमें नेट ऑफ नहीं करना है. 4A B2C में नेट ऑफ करके शो करना है, डिस्क्लोज करना है, एंड 4B B2B में नेट ऑफ करके शो नहीं करना है, और ये इंफॉर्मेशन मैंडेटरी है. It gets auto-populated from GSTR1, but it is recommended to check once. And 4C is zero-rated supply. Export on payment of tax except supplies to SEZ. तो zero-rated supply जो हम जिसका पेमेंट कर रहे हैं वाले सप्लाईज नहीं, जिसका विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स जो सप्लाईज है जीरो रेटेड वो वाले कवर्ड नहीं है यहाँ पे. यहाँ पे सिर्फ वही सप्लाईज कवर्ड है जिन पे हम टैक्स का पेमेंट कर रहे हैं, उसका डिस्क्लोजर है. And then supply to SEZ on payment of tax. The supply to SEZ without payment of tax are disclosed in table 5, and supply to SEZ on payment of tax is mandatory and to be disclosed under table 4. Table 4E is deemed exports, which are to be disclosed here. Table 4F is the advances on which tax has been paid but invoice has not been issued, not covered under A to E above. This is also a mandatory field, but इसमें क्या आता है, advance received less adjusted. Basically, if अगर आपने financial year 22-23 में 10,000 जितना advance receive किया है, तो और एडजस्ट 8,000 ही हुआ है, 2,000 का इनवॉइस इशू करना पेंडिंग है, तो 10,000 इज द एडवांस रिसीव जितना आपने रिसीव किया है, एंड एडवांस एडजस्टेड इज 2,000. So you need to disclose only advance adjusted is 8,000. So you need to disclose only 2,000 जिसका एडवांस रिसीव हो गया है बट एडजस्ट नहीं किया, दैट इज इनवॉइस इशू करना पेंडिंग है. इसलिए यहाँ पे नेट ऑफ एडजस्टेड, बेसिकली एडवांस रिसीव नेट ऑफ एडजस्टेड यहाँ पे शो करें. This is inward supplies on which tax is to be paid on reverse charge basis. ये basically inward RCM है, not in respect of outward, and ये auto fill हो जाता है A2G का सब टोटल टेबल 4 के अंडर. Then comes 4I, credit notes issued in respect of transactions specified in B2E. B2E is basically these all transactions. इनके रिस्पेक्ट में जो भी क्रेडिट नोट है, जो भी डेबिट नोट है, क्रेडिट नोट शो होगा 4I में एंड डेबिट नोट शो होगा 4J में. ये भी मैंडेटरी फील्ड्स है. यहाँ पे 4A क्यों नहीं लिखा है, बिकॉज इनका जो भी क्रेडिट और डेबिट नोट है वो वहीं पे दिखाना है. तो टैक्सेबल सप्लाई B2C को किया प्लस जो भी प्लस माइनस क्रेडिट नोट डेबिट नोट है वो नेट ऑफ करके यहाँ पे दिखाना है. और 4B से लेकर के 4E के जो भी क्रेडिट और डेबिट नोट्स है वो यहाँ पे 4I एंड 4J में रिस्पेक्टिवली शो किए जाएंगे. यह है सप्लाईज और टैक्स डिक्लेयर्ड थ्रू अमेंडमेंट्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर. कोई इनवॉइसेस में हम जो अमेंडमेंट्स करते हैं उसमें हमने एडिशन किया है, माइनस किया है, या बाद में कोई अमेंडमेंट किया है तो उसका डिस्क्लोजर यहाँ पे आता है. दिस इज द सब टोटल फॉर I to L. एंड देन ये टेबल 4N में सप्लाईज एंड एडवांसेस ऑन विच टैक्सेस टू बी पेड, ये उसका टोटल है. ये टोटल आउटवर्ड सप्लाईज का यहाँ पे टोटल आ गया. नाउ विल गो ऑन टेबल 5. टेबल 5 में बेसिकली वो सप्लाई आउटवर्ड सप्लाईज रिपोर्ट होते हैं जिसपे टैक्स पेएबल नहीं है. टेबल 4 में वो आउटवर्ड सप्लाईज है एज आई एक्सप्लेन्ड अर्लियर जिसमें टैक्सेस पेएबल, एंड टेबल 5 में वो सप्लाईज है जिसमें टैक्सेस नॉट पेएबल. Zero rated supply export with payment of tax goes under table 4 and without payment of tax goes under table 5. Supply to SEZ with payment of tax goes under table 4. Without payment of tax goes under table 5. And supplies on which tax is to be paid by the recipient on reverse charge basis. RCM basis पे जो टैक्स पे करना है, जो RCM सप्लाई पे जो टैक्स पे करना है वो यहाँ पे डिस्क्लोज होगा. If there are any exempted supplies you are doing, exempted outward supply, nil rated, currently तो कोई notified नहीं है,
फिलहाल नील रेटेड, तो ये हमेशा 0 ही रहेगा, ऑप्शनल है वैसे भी। बट टिल नाउ देयर इज नो सच नोटिफिकेशन विथ जहाँ पे नील रेटेड सप्लाई को अभी तक कोई डिस्क्लोज किया है। अभी तक कुछ ऐसा नील रेटेड सप्लाई नहीं आया है, तो नोटिफाइड नहीं है बेसिकली। नॉन जीएसटी सप्लाईज on which GST is not applicable, and then the subtotal, it will get auto-filled. And credit notes and debit notes, ये ऊपर के अमाउंट नेट ऑफ क्रेडिट नोट्स नहीं रहेंगे, सिर्फ टेबल 4A में B2C नेट ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स रहेगा। यहाँ पे A to F के जितने भी क्रेडिट और डेबिट नोट्स है वहां का डिस्क्लोजर नीचे आएगा। एंड उस रिलेटेड ड्यूरिंग द ईयर अगर कोई अमेंडमेंट्स किए हैं तो उसका भी डिस्क्लोजर नीचे ही आएगा। देन यहाँ पे turnover on which tax is not to be paid, दिस इज द अमाउंट ऑफ A to L, टेबल 5 का टोटल आ जाता है यहाँ पे। देन यहाँ पे टोटल टर्नओवर इंक्लूडिंग एडवांसेस 4N प्लस 5M माइनस 4G, जो एडवांसेस है माइनस 4G, वन सेकेंड, माइनस 4G इज RCM, बिकॉज ये आपका इनवर्ड है, इनवर्ड सप्लाई है, इसलिए इसको एक्सक्लूड कर देंगे। तो यहाँ पे आपका टोटल टर्नओवर आ जाएगा, टेबल 4 का टोटल प्लस टेबल 5 का टोटल एंड लेस द इनवर्ड RCM, बिकॉज इट इज नॉट अवर आउटवर्ड सप्लाई एंड टोटल टर्नओवर में वो इंक्लूड नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे उसको एक्सक्लूड करेंगे। ये ऑटो फिल हो जाएगी ये टेबल, इसको सॉरी इसको मैनुअली फिल करने की नीड नहीं है। Now going ahead with table 9. Table 9 में basically details of the tax paid as declared in returns. आपने मंथली जो भी रिटर्न फाइल की रहेगी, नॉट DRC-03, जो भी रिटर्न में आपने जो टैक्स पे किया रहेगा, जो मंथली आप 3 भी फाइल करते हो उसमें जो भी टैक्स पे किया रहेगा उसका डिस्क्लोजर यहाँ पे आएगा एंड इट इज मैंडेटरी। रिवर्सल वाले और ITC अवेल्ड वाले पार्ट ऑप्शनल है। रेस्ट सप्लाईज और टैक्स डिक्लेयर्ड थ्रू सॉरी टेबल 9 इज मैंडेटरी। एंड टेबल 9 में अगर वो पार्ट कॉमन मिस्टेक्स में कवर होगा वो ऑटोफिल होके आता है, बट यू विश टू एडिट इन ऑर्डर टू रेक्टिफाई, लाइक कोई मिस्टेक हो गया आपको रेक्टिफाई करना है तो आप वो एडिट कर सकते हो। एंड इसका जो टैक्स लाइबिलिटी है वो टेबल 4 के टैक्स लाइबिलिटी से मैच होना चाहिए। टेबल 4 में जो ऊपर अभी देखा था तो यहाँ पे जो टेबल 4 है इसका जो टैक्स लायबिलिटी आएगा ना टोटल, वो उससे मैच होना चाहिए इंक्लूडिंग RCM, बिकॉज RCM भी हमारा इनवर्ड नहीं, मतलब जिसपे हम टैक्स पे करते हैं वो भी टैक्स लायबिलिटी का पार्ट बनता है, इसलिए वो नीचे भी रिपोर्ट होता है, बिकॉज 3B के थ्रू उसका भी पेमेंट होता है कैश में। तो और 5 कवर इसलिए नहीं है बिकॉज 5 तो सारे विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स वाले हैं, जिनपे कोई टैक्स का पेमेंट नहीं है, जिनपे कोई टैक्स एप्लीकेबल नहीं है। तो टेबल 4 के साथ में टेबल 9, दिस इज टेबल 9, इट इज मैंडेटरी, ये टेबल 9 के साथ में मैच होना चाहिए। टेबल 10 इज सप्लाईज और टैक्स डिक्लेयर्ड थ्रू अमेंडमेंट्स। ये बेसिकली अगर फॉर एग्जाम्पल लेट्स से फाइनेंशियल ईयर 22-23 है, उसमें कोई इनवॉइस रिपोर्ट करना ओमिट हो गया है, तो वो आपको कहाँ सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर में आपने लाइक मार्च का इनवॉइस था बट आपने अप्रैल में रिपोर्ट किया है, तो फाइनेंशियल ईयर चेंज हो गया, सो नाउ GST एंड 9 में तो वो ऑटो पॉपुलेट होगा नहीं, तो उसका डिस्क्लोजर टेबल 10 में आता है इफ यू आर डिक्लेयरिंग एनी इनवॉइस। एंड ये भी नेट ऑफ डेबिट क्रेडिट नोट्स होते हैं, नेट ऑफ डेबिट क्रेडिट नोट्स होते हैं दोनों। दिस इज ऑल्सो सप्लाईज और टैक्स रिड्यूस थ्रू अमेंडमेंट्स, लाइक अगर कोई इनवॉइस डाला था बट आपने ओमिट किया है या कुछ भी इशू हुआ है सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर में, तो वो आपको यहाँ पे रिपोर्ट करना है। एंड HSN summary, that is table 17 in respect of outward supply. HSN summary is also important because it is also mandatory. Table 17 में जो HSN summary है in respect of outward supply, that is mandatory for taxpayers exceeding turnover exceeding 5 crores. जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है उनको B2B एंड B2C दोनों का HSN प्रोवाइड करना कंपलसरी है, B2B as well as B2C for the persons who have turnover exceeding 5 crores, but for the persons who have turnover up to 5 crores उनके लिए
अगर सिर्फ B2C सप्लाईज है तो फिर HSN समरी इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट अगर B2B एक भी इनवॉइस अगर B2B है तो B2B प्लस B2C दोनों का रिपोर्ट करना पड़ेगा HSN। इन सिंपल वर्ड्स, if your turnover is more than 5 crores to be, or be it B2B और B2C जो भी सप्लाईज है, कंपल्सरीली HSN रिपोर्ट करना कंपल्सरी है। आउटवर्ड सप्लाईज, इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज आई एम टॉकिंग। एंड अगर वो टर्नओवर इज अप टू 5 crores, देन अगर B2B सप्लाई नहीं है, ओनली B2C है, तो HSN रिपोर्ट करना कंपल्सरी नहीं है। लेकिन अगर एक भी इनवॉइस B2B है, एक हो फिर 100 हो या 10 हो, B2B प्लस B2C दोनों का HSN रिपोर्ट करना कंपल्सरी है। So this is all about a brief for GSTR 9. Now we'll see the practical issues in respect of outward supplies. First is, your invoice gets missed in GSTR 1, but it is present in GSTR 3B. So basically, I discussed earlier as well, अगर GSTR 1 में invoice आपका मिस हो चुका है एंड GSTR 3B में आपने रिपोर्ट किया है, दैट इज आपने टैक्स पे कर दिया है, बट GSTR 1 में मिस हो गया है। हम एग्जांपल लेते हैं, मार्च 2023 में आपने वो इनवॉइस GSTR 3B के थ्रू पेमेंट कर दिया है, बट वो मिस हो गया है। तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप सब्सिक्वेंट मंथ में रिपोर्ट कर दो। अगर आप तभी भी नहीं कर रहे हो तो मैक्सिमम 30 नवंबर तक, वो नोटिफिकेशन जो अभी डिस्कस किया था, 30 नवंबर 2023 तक आप रिपोर्ट कर सकते हो। अगर आपने तभी भी रिपोर्ट कर सकते हो, बिकॉज वो केस में भी नोटिस आ सकती है, बिकॉज वो फाइनेंशियल ईयर चेंज हो गया, GSTR 1 में आपने डाला नहीं, GSTR 3B में डाल दिया, बट आपने अगर नेक्स्ट सब्सिक्वेंट इमीडिएट मंथ में अगर रिपोर्ट कर दिया है या फिर 30 नवंबर तक भी रिपोर्ट कर दिया है, तो आपका जेन्यून केस है। सो अगर नोटिस भी आएगा तो आप रिप्लाई दे सकते हो। आपके पास वो है कि आपने GSTR 1 में रिपोर्ट कर दिया है, तब गलती से नहीं किया था, पर बाद में रेक्टिफाई उसको कर दिया था नोटिस आने से पहले ही। सेकेंड केसेस, GSTR 1 में नहीं गया, GSTR 3B में चला गया मार्च 2023 के, बट आपने उसको 30 नवंबर तक रिपोर्ट किया ही नहीं GSTR 1 में, और एक्सेस पेमेंट किया हुआ है 3B में, बिकॉज वो लायबिलिटी नहीं है तो वो एक्सेस पेमेंट वैसे काउंट होगा। तो GSTR 1 में नहीं है बट 3B में है, और आपने 30 नवंबर तक रिपोर्ट भी नहीं किया, तो अब उसका क्या डिस्क्लोजर आएगा? GSTR 9 में यू नीड टू डिस्क्लोज दैट इन टेबल 4। टेबल 4 में आपको जो डेटा ऑटो पॉपुलेट होके आता है, आपको उसमें पहले ऐड करना पड़ेगा, एंड देन टेबल 9 में एडिट करना पड़ेगा। टेबल 4 एंड टेबल 9 में उसका डिस्क्लोजर आएगा, आपको ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज वो आपका 1 में मिस हो गया। और अगर फर्स्ट केस में जहाँ पे आप सब्सिक्वेंट मंथ में रिपोर्ट कर रहे हो टिल 30 नवंबर 2022, और अगर आपने तब रिपोर्ट कर दिया है तो तब आपका डिस्क्लोजर वही टेबल 4 की जगह टेबल 10 में आता, बिकॉज आपने सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर में रिपोर्ट किया है। सो दो ये अलग अलग केसेस है। अगर आप रिपोर्ट कर देते हो टिल 30 नवंबर तो आपको टेबल 10 में डिस्क्लोज करना है, लेकिन अगर आप नहीं करते हो तो फिर आपको टेबल 4 में करना पड़ेगा 9 में रेक्टिफाई करने के लिए। इस केस में भी नोटिस आ सकती है, बट अगर आप रिपोर्ट कर देते हो सब्सिक्वेंट मंथ में या टिल 30 नवंबर तो आपका जेन्यून केस है, आप रिप्लाई दे सकते हो। आप रिपोर्ट ही नहीं करोगे देन 9 में रेक्टिफाई करोगे, तो दैट इज अ डिफिकल्ट केस। So you should rectify it as soon as you determine that. जैसे आपने मिस्टेक डिटरमिन किया, आप तुरंत नेक्स्ट नहीं तो उससे नेक्स्ट मंथ में उसको GSTR 1 में डाल दो। ये केस। गोइंग अहेड, सेकंड केस, अगर इनवॉइस 3B में मिस हो गया और आपने 1 में अपलोड कर दिया, अभी सेम मंथ मार्च 2023 आपने 1 में तो अपलोड कर दिया, बट आपने 3B में उसका पेमेंट ही नहीं किया, तो आपके पास वही दो केसेस है। आप 30 नवंबर तक उसको 3B में पेमेंट कर दो। अगर आप नहीं करोगे 3B के थ्रू पेमेंट, आपको, अगर आप 3B के थ्रू पेमेंट कर दोगे तो भी आपको नोटिस आ सकता है, बिकॉज आपने 1 में रिपोर्ट किया है बट 3B में पे नहीं किया। तो एज सुन एज पॉसिबल जैसे डिटेक्ट हो सब्सिक्वेंट मंथ में या टिल 30 नवंबर उसको पे करके खत्म करो। लेकिन अगर आपने उधर भी पे नहीं किया तो 9 में उसका क्या होगा? बिकॉज वो GSTR 1 में तो है, आपके टेबल 4 में ऑटो पॉपुलेट होके आ रहा है, बट 3B में पेमेंट नहीं गया है।
तो आपको उसका पेमेंट DRC-03 के थ्रू करना पड़ेगा। DRC-03 फॉर्म क्या है, कैसे फाइल करते हैं, उसके क्या इश्यूज है, क्या कॉजेज ऑफ पेमेंट है, विल डिस्कस इट लेटर। बट उसको आपको DRC-03 के थ्रू पेमेंट करना पड़ेगा अगर आपने GSTR-3B में उसका पेमेंट नहीं किया है तो, एंड वो इनवॉइस GSTR-1 में जा चुका है। तो सेकंड केस वाज GSTR-1 में तो इनवॉइस है, 3B में आपने उसका पेमेंट किया नहीं। तो दो चीजें हैं, आप 30 नवंबर तक पेमेंट कर दो। अगर आप नहीं कर रहे हो 30 नवंबर तक पेमेंट, तो आपके पास ऑप्शन है ऑप्शन है कि DRC-03 में पे कर सकते हो, एंड देन 9 में डिस्क्लोज कर दो, टेबल 9 में, कि आपने पेमेंट किया है करके। नाउ गोइंग अहेड, दोनों में ही मिस हो गया। थर्ड केस इज अ बिग प्रॉब्लमेटिक केस। GSTR-1 में भी आपने इनवॉइस रिपोर्ट नहीं किया, एंड देन GSTR-3 में भी उसका पेमेंट नहीं किया। तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप न ये टिल 30 नवंबर रिपोर्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपने 30 नवंबर तक भी रिपोर्ट नहीं किया, तो 9 में आप क्या कर सकते हो उस चीज का। दो केसेस है सेम, टिल 30 नवंबर रिपोर्ट करो, या तो टिल 30 नवंबर रिपोर्ट करोगे तो टेबल 10 में आएगा वो, बिकॉज यू आर रिपोर्टिंग इन द सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर। सो टेबल 10 में उसका एक डिस्क्लोजर आएगा, और टेबल 9 में एक एडजस्टमेंट आएगी, टैक्स लायबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी, और DRC-03 से पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर आप GSTR-1 और 3B में रिपोर्ट नहीं कर रहे हो उसको, एंड अभी आपको 9 फाइल करना है, 30 नवंबर का डेट जा चुका है, तो आप 9 में क्या करोगे उसका, टेबल 4 में ऐड करोगे, बिकॉज टेबल 10 में तो आप डाल ही नहीं सकते, बिकॉज आपने सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर में रिपोर्ट ही नहीं किया है। तो टेबल 4 में आप ऐड करोगे, एंड देन DRC-03 के थ्रू पेमेंट करोगे। टेबल 4 में ऐड करोगे तो टेबल 9 में भी ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज टेबल 9 का लायबिलिटी टेबल 4 के साथ में मैच होना चाहिए। इफ दे बोथ आर नॉट मैचिंग, तो फिर इट इज मतलब दे बोथ शुड मैच, बिकॉज नोटिस आ जाएगा, वरना टेबल 4 में लायबिलिटी इतना है, टेबल 9 में आपने पे ही नहीं किया। सो बेसिकली वो डिस्क्लोज करना इम्पोर्टेंट है। तो हियर ऑल्सो एक समरी में तीनों केसेस का, अगर फर्स्ट केस वाज, अगर GSTR-1 में मार्च 2023 में आपने GSTR-1 में एक इनवॉइस मिस कर दिया, एंड GSTR-3 में ऑलरेडी उसका पेमेंट करके बैठे हो, तो फिर आपके पास ऑप्शन है कि आप वो इनवॉइस टिल 30 नवंबर GSTR-1 में ऐड ऑन कर दो। नोटिस आएगा तो आपके पास जेन्यून रिप्लाई है कि आपने वो GSTR-1 में अपलोड कर दिया है। बट अगर आपने नहीं किया टिल 30 नवंबर, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप GSTR-9 में जा सकते हो। GSTR-9 में यू नीड टू रिपोर्ट दैट इन टेबल 4, बिकॉज आपने सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर में उसको रिपोर्ट नहीं किया है, तो टेबल 4 में ऐड करोगे, एंड देन उसके बाद में टेबल 9 के साथ भी टेबल 4 का लायबिलिटी मैच होना चाहिए, तो उसमें भी एडिशन आएगा। सेकेंड केस वॉज व्हेन GSTR-3B में इनवॉइस मिस हो गया है एंड GSTR-1 में एडेड है। GSTR-1 में ऑलरेडी इनवॉइस है, GSTR-3B में नहीं है, मतलब शॉर्ट पेमेंट है। इसमें भी यू हैव टू ऑप्शंस, either to rectify it in the subsequent financial year, but maximum till 30th November as per the circular which was notified. तो मैक्सिमम 30th नवंबर तक अगर आपने रेक्टिफाई कर दिया, तो उसका डिस्क्लोजर आएगा व्हाट यू से टेबल 10 में, सॉरी टेबल 9 में, बिकॉज आप वैसे पेमेंट करोगे। लेकिन अगर आपने रेक्टिफाई नहीं किया और टेबल 9 में डायरेक्टली रेक्टिफाई कर रहे हो, तो DRC-03 के थ्रू पेमेंट करना पड़ेगा, डिफरेंशियल अमाउंट का जो 1 में रिपोर्ट किया था बट 3B में मिस हो गया था, तो DRC-03 के थ्रू पेमेंट करना पड़ेगा। एंड थर्ड केस वाज GSTR-1 और 3B दोनों में आपने वही सेम इनवॉइस मिस कर दिया है, एंड सेम आपके पास दो ऑप्शंस है, टू रिपोर्ट इट इन द सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर टिल 30th नवंबर। अगर आपने तभी रिपोर्ट नहीं करा, तो आपको 9 में रिपोर्ट करना पड़ेगा। It is mostly preferred to solve these issues in the subsequent financial year till the notified date, which is 30th November. तब तक अगर सॉल्व हो जाता है, in respect of outward supplies I'm talking currently, तब तक ये इशू सॉल्व हो जाते हैं, तो 9 में नहीं आता इशू। अगर तब सॉल्व नहीं होंगे, तो 9 में आपको DRC-03 के फॉर्म में जाना पड़ेगा, एंड उसके थ्रू पेमेंट करना पड़ेगा। हम डिस्कस करेंगे DRC-03 के पेमेंट कैसे करते हैं, एंड उसमें भी मतलब क्या क्या मिस्टेक्स लोग करते हैं।
एनुअल रिटर्न के टाइम पे जब DRC 03 भरते हैं, एडिशनल लायबिलिटी आती है तो ये एक एग्जाम्पल है नोटिस का, डिपार्टमेंट के थ्रू आया था। इसमें जो नीचे डिफरेंस है 1,40,000 का, लाइक इट वाज अ डिफरेंस बिटवीन जो GSTR 9 में टेबल 4 ऑटो पॉपुलेट होके आता है GSTR 1 से, उसका एंड 3B का डिफरेंस था। 3B में शॉर्ट पेमेंट था, ऐसा डिपार्टमेंट का रिमार्क था। या ये जो नंबर में जी है, दिस इज एज पर GSTR 9 का जो टेबल 4 है, बेसिकली GSTR 1, एंड जो एच में है दिस इज GSTR 3B। तो इसमें शॉर्ट पेमेंट आ रहा था 1,40,000 का। एक B2C इनवॉइस मिस आउट हो गया था, दैट वाज जेन्यून। बट उसके अलावा एक डेबिट नोट था जो GSTR 1 में करेक्ट गया था, जो लेस होके आना चाहिए था क्रेडिट नोट में से, बट वो यहाँ इस अमाउंट में 14 लाख वाली अमाउंट में ऐड होके पकड़ रहा है। 9 से जो हम GSTR 1 का समरी ऐड कर सॉरी डाउनलोड करते हैं, उसमें डेबिट नोट माइनस होके आना चाहिए था, बट इसमें ऐड होके शो कर रहा है। इंडिविजुअल रिटर्न्स में चेक किया है तो प्रॉपर डिस्क्लोज किया हुआ है एज अ डेबिट नोट, तो वो लेस होके आना चाहिए था बट वो ऐड होके आ रहा था। तो एक वो डिफरेंस था, मतलब ये मिस्टेक थी 60,000, वो 30,000 जितना कुछ डेबिट नोट था जो कि ऐड हो गया था, तो इसलिए डिफरेंस वो 1,40,000 में से 60,000 का डिफरेंस तो वही आ रहा था कि 30,000, मतलब सिस्टम का एरर था कि क्या था वो, उसके बेसिस पे नोटिस आ गई थी। 30,000 डेबिट नोट का लेस होना चाहिए था बट ऐड हो गया था। सो नाउ आई विल बी शेयरिंग some info about DRC 03. Let me open the PPT. So DRC 03 is basically what? वो एक फॉर्म है, और यू कैन से इट इज अ स्टेटमेंट फॉर्म है बेसिकली। अगर वॉलेंटरीली टैक्स पेमेंट्स करने होते हैं, कुछ केसेस होते हैं उसके जहाँ पे DRC 03 भर सकते हैं, एंड it is also used to file voluntary tax payments. One second. DRC 03 वाला PPT विजिबल है क्या? हेलो? Yes, it is visible. Okay. So DRC 03 is basically a form which is used to file voluntary tax payments. जो हमको वॉलंटरी टैक्स पेमेंट्स करने, लाइक एक्सेस ITC क्लेम होता है, या फिर कोई डिमांड आती है, उसके केस में शोकॉज नोटिस आता है, उसके केस में पे करना होता है। तो इन डेफिशिएंसी ऑफ टैक्सेशन आफ्टर द डेडलाइन फॉर फाइलिंग टैक्स रिटर्न्स, जो केस अभी बताया था, जो लाइक जो इनवॉइस GSTR 1 में रिपोर्ट किया था बट 3B में मिस हो गया था, अंटिल 30 नवंबर भी नहीं रिपोर्ट हुआ था, तो GSTR 9 में अगर रिपोर्ट करना है तो पेमेंट DRC 03 के थ्रू ही जाएगा। एंड going ahead with the prerequisite to keep in mind prior to filing form DRC 03, it is used to pay taxes voluntarily and any time before the issuance of show cause notice. That is, अगर आपको आपकी मिस्टेक जो थी, जो पहले केस डिस्कस किया था, 3B में अगर पेमेंट करना है, नोटिस आने के पहले ही आपने पेमेंट करके रखा है, तो आपके पास प्रूफ है कि आपका जेन्यून केस था, आप भूल गए थे एंड आपने सब्सिक्वेंट मंथ में उसको पे कर दिया है। और अगर नोटिस आ गया तो उसके बाद तो आपको पे करना ही पड़ेगा। DRC 03 full form in GST called the demand and recovery forms.
हाउ टू फाइल DRC-03? GST पोर्टल पे जो यूजर सर्विसेज में माय एप्लीकेशंस का टैब है, यूजर सर्विसेज में माय एप्लीकेशंस, वहां पे आता है DRC-03 का। एंड उसमें एक बहुत कॉमन मिस्टेक हो सकती है। उसके पहले हम उसके जो कॉज ऑफ पेमेंट है वो देख लेते हैं। एक तो वॉलंटरी होता है, जो आपको आपकी मिस्टेक रेक्टिफाई करनी है उसके लिए। दूसरा शो कॉज नोटिस, अगर उसके लिए आपको टैक्स पेमेंट करना है या शो कॉज नोटिस आया है और आपको टैक्स डिपॉजिट करना है, तो किससे करोगे? DRC-03। एनुअल रिटर्न, द थर्ड केस इज एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न इज बेसिकली, अभी जो 3 केसेस मैंने बताए थे, 3-4 केसेस जो डिस्कस किए अभी, उसमें अगर आपको एनुअल रिटर्न में रेक्टिफाई करना है, लाइक आपने 1 में रिपोर्ट कर दिया है, 3B में आपने किया ही नहीं 30 नवंबर तक, तो अभी आप कहाँ रिपोर्ट करोगे उसको? मतलब टैक्स पे कैसे करोगे? उसके बाद तो आप कर नहीं सकते, तो आप एनुअल रिटर्न के थ्रू करोगे, बराबर। तो एनुअल रिटर्न में 1 में तो रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो 9 के लाइबिलिटी के साथ टैली हो रहा है, पर शॉर्ट पेमेंट दिखेगा। तो आपको DRC-03 के थ्रू पेमेंट करना पड़ेगा विद एप्लीकेबल इंटरेस्ट वगैरह जो भी रहेगा वो। GSTR 9C के केस में एंड 1 वर्सेस 3B, अगर एक्सेस ITC क्लेम कर लिया है तो, लाइक 1 वर्सेस 3B इज द केस जो अभी डिस्कस किया था, शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स इन 3B। 2B वर्सेस 3B, excess claim of ITC, tax as certain through DRC-01A, जो नोटिस के थ्रू आता है, स्क्रूटिनी एंड अदर केसेस। ये केसेस में DRC-03 फाइल होता है। एंड एक बहुत कॉमन मिस्टेक पॉसिबल है, वो जब भी DRC-03 के पेमेंट ऑप्शंस में यू कैन एडजस्ट इनपुट टैक्स क्रेडिट, बट इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्स अमाउंट ही एडजस्ट हो सकता है। इंटरेस्ट, लेट फीस और पेनल्टी के केस में वो एडजस्ट नहीं हो सकता। तो टैक्स अमाउंट के केस में भी, अभी फॉर एग्जांपल आप मार्च 2022 का कोई शो कॉज नोटिस था जिसके अगेंस्ट आज पेमेंट कर रहे हो DRC-03 के थ्रू, तो उस केस में आज जो उधर इनपुट टैक्स क्रेडिट का बैलेंस दिखेगा पेमेंट के टाइम, उतना पूरा एडजस्ट नहीं करना जो मार्च 2022 जब का डिमांड है, जब का जो शो कॉज नोटिस है, उसके अगेंस्ट उस तभी जो भी रनिंग बैलेंस रहेगा, क्रेडिट बैलेंस, जो क्लोजिंग बैलेंस तभी रहेगा, उतना ही अमाउंट आप क्रेडिट लेजर के अगेंस्ट आज के डेट में एडजस्ट कर सकते हो। आज अगर आप 27 सितंबर को पेमेंट कर रहे हो, तो एज ऑन 27 सितंबर पे जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का बैलेंस है, वो आप आपके डिमांड के अगेंस्ट पूरा उठा के एडजस्ट नहीं कर सकते। तो मार्च 2022 है जब का वो डिमांड है या जब का वो नोटिस है, तभी जो भी क्लोजिंग बैलेंस रहेगा इनपुट टैक्स क्रेडिट का, उसके मतलब उतने ही बैलेंस के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकता है। रेस्ट ऑल कैश में पेमेंट करना पड़ेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट DRC-03। Ma'am, you're on mute. Okay. Thank you, Preeti ma'am and Abhay sir, for giving this opportunity to share my knowledge about the mistakes in annual return and professional opportunities thereof, and I have completed the same. Hello. 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 Yeah. It is my privilege to propose a vote of thanks and acknowledge the contribution of CA Ruchika Sharma. The session was truly very informative and provided a lot of clarity on annual return filing and GSTR1. Thank you so much, ma'am, for sharing your deep insight on the subject, and we really acknowledge for your valuable time. Thank you so much. I would now like to take this session forward by introducing our next speaker, CA Hiloni Gala. CA Hiloni Gala is a highly experienced chartered accountant specializing in indirect taxation with a specific focus on goods and service tax.
With over 5 years of experience in this field, Hiloni has established herself as a leading expert and has contributed significantly to her firm's success as a partner in our well-established CA firm. She possesses an in-depth understanding of GST laws, regulations, and procedures. She specializes in GST compliance, including registration, filing returns, and handling audits. Over the years, she has dedicated her expertise to understanding the complexities of GST legislation and providing valuable insights to clients across various industries. She has successfully represented clients in GST litigation matters, including disputes, refunds, appeals, and assessments. Her in-depth knowledge of GST laws and procedures, coupled with her strong analytical skills, has enabled her to effectively handle complex litigation cases. Hiloni has dedicated her expertise to understanding the complexities of GST legislation and providing valuable insights to clients across various industries. She has helped clients navigate the GST landscape, ensuring compliance and optimizing tax strategies. As a partner, she actively contributes to the growth and development of her team. She leads by example, providing guidance and mentoring junior members and fostering a collaborative work environment. I hand over the platform to CA Hiloni Gan. Good evening, everyone. My screen is on. So, are you able to see the screen? So, in first session, you must have seen the outward liability part of the GSTR 9. And in this session, I will share with you ITC part of GSTR 9. And so, how to deal with how to deal with ITC portion of ITC segment of GSTR 9. So, let us start with that. So there are some misconception or mistakes that we face while filing GSTR 9. So I will discuss that in detail over here. So first of all, we will look about the tables which are auto-populated in GSTR 9. So you must have seen that most of the data are auto-populated in GSTR 9. So for ITC part, we will discuss about table 6A, table 6G. Table 6A is total amount of input tax credit availed through form GSTR 3B. So whatever ITC you have availed in GSTR 3B, you can see that in table 6A, which is not editable. Next is table 6G, that is input tax received from ISD, that is input service distributor. Table 6K, that is Tran 1 credit, Tran 2 credit, that has been availed in GSTR 3B. Then table 9 is there. Table 9 is also auto-populated. In table 9, there are three columns basically, which is first one is tax payable, second is tax paid through cash, and then tax paid through credit. So then first tax payable, which is editable, which is to be derived correctly as per the correct information we have. But tax paid through cash and credit, that is auto-populated and which is editable. So we cannot edit that field. Next, can we edit auto-populated data from file GSTR 1 and 3B? So some data can be editable, some data are not editable at all. Non-editable data are here. Table 6A, which we discussed, that total ITC availed through GSTR 3B, which is not editable. Table 8A, which is GSTR 2A, the total amount available in GSTR 2A, which is it is also not editable. And table 9, the details of tax paid through cash and through credit. It is not editable at all. So these three are not editable. Others, rest are editable. Now we will move forward to
We will move forward to the table, actual table of GSTR 9. Is it visible? GSTR 9 is visible. Tech support or Maitri, if someone can help me by. Yes, Excel file is visible, right? No, I have started with Excel file. Just a second. Yes. I will share that now. So this is the actual picture of GSTR 9 and table of ITC, which we will discuss right now. 4 and 5 table you must have seen in session 1, and now we will discuss about table 6. So first of all, table 6 is about details of ITC availed during the financial year. So during the financial year 22-23, whatever ITC you have availed while filing GSTR 3B, that will be reflected over here. So the first part of the table 6A is 6A, which is total amount of input credit availed through form GSTR 3B, and it is auto-populated, and it is sum total of table 4A of GSTR 3B. So whatever you have claimed in GSTR 3B, that will be reflected over here, and it is auto-populated and it is not editable. Second is part 6B. Table 6B talks about inward supplies. Now in table 6, you are nothing to do with addition or any deletion. You are just supposed to do the bifurcation of ITC away during the year. So whatever you have availed in GSTR 3B, you just need to bifurcate into whatever is the normal input availed through input availed on input services, capital goods, RCM, input service distributor, transfer credit. So you need to just bifurcate the amounts over here. The total amount is given in table 6A, but you need to just bifurcate the amount in respective tables. So first table talks about normal inward supplies, that is other than any import or any reverse charge, but includes services received from SEZ. So in table 6B also they are asking about bifurcation into normal ITC into input, capital goods, and input services. But yes, there is option to show input and input services into one, and you can show it in input services, but capital goods ka bifurcation is mandatory. So whatever input you have availed, you need to just bifurcate into input services and capital goods. Second is input. Yes, for this type of bifurcation, you need to go through the purchase register of the client, and you need to jot down or tag the invoice wise details, that whatever input has been availed, that has to be bifurcated into input services and capital goods. Next is inward supply received from unregistered person liable to reverse charge. Though it is showing over here, but it has been scrapped in 12th October 2017 only, that RCM is not applicable on inward supplies from unregistered dealer. So this is not going to happen in any case. Next is inward supplies received from registered person liable to reverse charge. This talks about table section 9, that whatever ITC you have availed in respect of in reverse charge mechanism, inward reverse charge, you need to bifurcate over here, that input, same way input services and capital goods. The bifurcation will move further into 3 category: input services, and capital goods. Over here also you can merge input and input services together, and you need to show capital goods separately. Next is import of goods including supplies from SEZ. So you need to show the ITC, whatever ITC you have availed on import of goods over here. So CGST, SGST is blank because that is not applicable. Only IGST amount will get reflected. Import of service, same way. If it is import of goods, then it will go in table 6E, and if it is import of service, then it will go under
6F. 6G talks about input service credit received from ISD. If it is ISD, if input credit is received from ISD, then it has to be mentioned over here in table 6G. 6H is very much interesting. 6H talks about the amount of reclaim, ITC reclaim under the provisions of Act. Section 37 talks about the ITC to be reversed if payment is not made under within 180 days of the receipt of the invoice or ITC availed. But if ITC is availed and if payment was not made within 180 days, then taxpayer needs to reverse that amount along with interest. And yes, that ITC reversed can be reclaimed when the amount is properly paid to the supplier, and the amount of ITC can be reclaimed over here. So you need to bifurcate into, you need to show the bifurcation of total ITC. Out of total ITC, how much ITC is pertaining to reclaimed ITC. So the amount will come here. Now table 6I talks about the total from 6B to 6H, and if there is any difference, then it will be reflect over here. So in my case, there is a difference of some 18 lakhs. But yes, I have a proper reason for this. This ITC is pertaining to previous financial year, that is 21-22. So I will show this amount in table 6M, which is any other ITC available but not specified above. So I will show the bifurcation of ITC availed during the 22-23, but it is pertaining to 22-23. Then I will show this in table 6 to table 6B to table 6H. And if any ITC is available for the year 21-22, then I will show under 6M, that is any other ITC available but not specified above. So the total difference will go down. Next is transitional credit. If ITC availed to trans 1 or trans 2, then it will be mentioned. It will come under 6K and 6L. And 6M we have talked about. If something is there which is not specified above, then you can show it in 6M. And 6N is the total, and 6O is a total ITC availed. That will be the total amount. So this is all about table 6. So table 6 is details of ITC availed during the financial and its bifurcation into inputs, input services, capital goods, RCM, ISD, and import of service, import of goods. And any amount is reclaimed, and that will come here. And if ITC is pertaining to previous financial year, that you need to mention over here. So table 6 is clear. Now we will move forward to table 7. So table 7 is the details of ITC reversed and ineligible ITC for the financial year. So this will also come from GSTR 3B. So we need to just bifurcate. Sometimes we merge the reversal of 42-17-5 block credit into one category. But here you need to bifurcate the same. Though these are the optional field, like ABCD is optional, but we would recommend कि ये सब bifurcation दिखाना जरूरी है, क्योंकि this will help in at the time of litigation. So first is table 7A talks about reversal as per rule 37, which talks about if payment is not made within 180 days. Next is rule 7B talks about reversal as per rule 39, which is credit note issued to input service distributor. Next, table 7C talks about rule 42, reversal as per rule 42, which talks about the partial reversal of ITC, which is used for personal use or exempt supply. So that needs to be reversed under 42. And rule 43 talks about the ITC availed on capital goods, which is used for partly
for business purpose and partly for exempt or for personal purpose. So this will come under all these rules. Next is as per 17.5, which is very much very much interesting, that 17.5 block credit. Sometimes it happens that we have claimed wrongly 17.5 credit, but we need to reverse it in GSTR 3B, as well as we need to show this in the GSTR 9. Reversal of Tran 1 credit, Tran 2 credit, if it is there, and other reversal. If it is not in the list, then we can show it in other columns. So 7I talks about total ITC to be ITC reversed. And last but not the least, 7J talks about the net ITC available for utilization, which is the net amount of ITC available, which comes from 6O minus 7I. 6O talks about total ITC availed, and 7I talks about the total ITC reversed. So it is the net amount which can be utilized for making the setup of outward liability. So 7J is very important, and it will be reflected in GSTR 9C also. Now we will move over to table 8. Table 8 is any other, though it is showing other ITC related information, but most of the notices are flowing from table 8. So we need to be very careful while filing GSTR 9, and especially table 6 and 8, because it is the root cause of the litigation, and it is the root cause of the ITC, getting the notices on ITC mismatch. So first of all, table 8A. 8A is nothing but the total sum of GSTR 2A, net amount of GSTR 2A. So whatever ITC is available in GSTR 2A or 2B rather, this is the last year I will say GSTR 2A will come. Next year we will get the GSTR 2B over here, because if from January 2022 onwards 2B was getting generated, and we need to match the ITC with 2B. So this is the year where we will get both the 2A and 2B confusion. But yes, from next year we will get only 2B. So first 8A is talking about the ITC available as per GSTR 2A. It is auto populated. Table 8A is auto populated, and it is not editable. So out of this, we need to bifurcate. Whatever ITC is available in GSTR 2A, or rather say 8A, you need to bifurcate into two categories. First one is 8B, which will be also auto-populated, and which will come from table 6, 6B and 6H. Let us go to 6B. What 6B and 6H indicates? 6B indicates the inward RCM, inward supplies. Normal ITC you have availed. Yes, other than RCM, because RCM will not flow in table 8A. So this will not be considered over here to make it very far. And 6H is the amount of ITC reclaimed. So that both will come under GSTR 2A. So we can compare the same with the 6B and 6H. So it is the sum total of 6B and 6H, whatever you have availed during the year, that will come here. And yes, if there is a difference, then it will come under 8D. But out of this, there could be the cases where ITC was availed in the next financial year. There are cases that March entries, provision entries are passed, and sometimes ITC has not been taken at the time of audit. We are getting the invoices, and we are passing the entries in the books, but ITC was not claimed in the month of March, or some or any other reason could be there, that ITC was not what was not appearing in GSTR 2A, so we could not 2A or 2B, so we could not claim the ITC, we could not avail the ITC, so we availed in the next financial year, which is allowable till November. So we took the ITC next financial year, so that will come over here in table 8C. 8C talks about ITC on inward supplies.
received during the financial year, but availed in the next financial year up to specified period. So this specified period is nothing but the 30th of November 2023. In the case of financial year 2022-23, we can talk about the ITC which has been availed till November 2023. So we can put the amount over here that whatever ITC was availed in the next financial year pertaining to previous financial year, which is to be reported in table 8C. So the amount of difference will come over here. The total amount of ITC availed during the year, ITC available minus availed. It is the difference. Table 8D is the difference of the ITC which is not availed or excess availed. Okay. So in my case, the amount is showing positive, but there could be cases that amount is showing negative. So we need to prepare the reconciliation statement for this, and we need to keep it as a working paper for the upcoming litigation part. Next is table 8E. So the difference of 8D can be justified through the below tables. Like if in my case the same is appearing that difference is positive, so it could be because of ITC available but we have not availed, or ITC available but it is ineligible, or IGST paid on import of goods, then we have not claimed, or IGST credit availed on import of goods, and difference will come over here. So basically difference could be majorly because of it is not availed or lapsed, or it is ITC available but ineligible. So we cannot avail this same. So last, the amount will come as last 8K will reflect the total ITC to be lapsed in current financial year. So last amount will reflect the amount of ITC that is lapsed for the financial year, and we cannot avail the ITC for the next financial year also. So table 8A talks about the comparison with CSTR 2A, rather 8A, also we can say 8A with the ITC availed, and the difference we need to justify. Next is table 9. Table 9 is nothing but the amount of tax payable and amount paid through cash and credit. So payable will come from table 4, and if there are chances that there could be the there are chances that some in some month we have we have reversed excess ITC. So that will go that need to be paid through cash. So that will be added over here. Otherwise, it is pure liability, outward liability, and it will flow from GST from table 4. Next is table 10. Table 10 includes 10, 11 was about the outward liability. We will talk about table 12 and 13, which is also optional. Table 10, 11, 12, 13 talks about the particulars of transaction for the financial year. That is the 22-23 transactions pertaining to financial year 22-23. But the transactions were declared in next financial year till that specified period. Till specified period means any specified period, but up to 30th November. So 30th November is nothing but the return to be filed for the period October 2023. अक्टूबर 2023 तक अगर कुछ इंफॉर्मेशन आपने दिखाई है जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की है, that is pertaining to 22-23, then the same needs to be reported over here. So table 12 talks about the reversal of ITC availed during the previous financial year. There could be the possibility that we have identified the ITC to be reversed, which was wrongly availed in previous financial year, but we have reversed in the very next financial year within very specified period. So we can show in GSTR 3B, and same can be reflected, same can be mentioned over here. In the same way, ITC available for the previous financial year. Table 13 talks about ITC available for the previous financial year. So there are chances that we have missed some ITC, as I said earlier, कि ऑडिट के टाइम पे हमें कोई इनवॉइसेस मिले जो हमने मिस कर दिए आईटीसी लेने से. तो यस, वी कैन फाइल द सेम, वी कैन क्लेम द आईटीसी टिल अक्टूबर का जो रिटर्न फाइल करेंगे नवंबर में, तब तक हम लोग उसको आईटीसी ले सकते हैं. तो वो आईटीसी जो लिया होगा हमने, वो हमें यहाँ पे रिपोर्ट करना है.
अभी हम ऐसी क्वेरी हो सकती है कि टेबल 13 और टेबल 8C सेम ही होगा, बट नहीं, टेबल 13 में सारे आईटीसी आएंगे इंक्लूडिंग आरसीएम, बट टेबल 8C इज मोर और लेस सेम, बट टेबल 8C में वही आईटीसी आएंगे जो नॉर्मल आईटीसी है. इट विल नॉट इंक्लूड आरसीएम आईटीसी, बिकॉज उसका कंपैरिजन हो रहा है टेबल 2A से, जीएसटीआर 2A से या 8A से. 2A और 8A में आईटीसी आरसीएम नहीं आता है, तो यहाँ पे हम सिर्फ प्योर आईटीसी लेंगे जो इनवर्ट सप्लाईज का है, एक्सक्लूडिंग आरसीएम आईटीसी. बट यहाँ पे जो आएगा टेबल 13 में, that will include RCM ITC. So there is marginal difference between table 13 and table 8C. Both will reflect the ITC available of previous year in the next financial year, but the difference is because of RCM ITC. If there is no amount of RCM ITC, then the amount will be same. But if there are cases और chances के RCM का भी हमने liability पे नहीं किया था लास्ट ईयर में, तो हमने ये साल में अक्टूबर तक आरसीएम का लायबिलिटी भी पे कर लिया और आईटीसी भी क्लेम कर लिया, तो सेम विल बी रिफ्लेक्टेड ओवर हियर. नेक्स्ट इज टेबल 15. टेबल 15 is optional, which talks about the particulars or demand or refund received during the financial year. Table 16 is also optional. Table 18 is also optional, and table 19 is late fee and interest, which will be calculated automatically. So it is the practical approach of GSTR 9 for uh, for the ITC part. Now we will talk about the practical approach or common mistakes we face. One thing I have missed over there, that notification number 22/2022, which talks about table 12 and 13. The table 12 is to be 12 is to be read with this, that amount of ITC reversed during the financial year. तो यहाँ पे हम ऐसे read करेंगे, it is about figures are to be words this has to be substituted, that April 22 to September 22, उसकी जगह पे अभी आ जाएगा April 22 to October 22, that is up to November 22. Same way goes with the table 13, that is अक्टूबर नवंबर तक हमने जितना भी आईटीसी लिया है, एक्सेस लिया है या रिवर्स किया है, तो वो हमें वहां रिपोर्ट करना है, which we have discussed in table 12 and 13. But yes, ये अभी आपको सब्स्टिट्यूशन फॉर्म में दिखने लगेगा. नेक्स्ट इज प्रैक्टिकल इश्यूज इन इनपुट टैक्स क्रेडिट. तो सबसे पहले इशू आता है that ITC bifurcation required in GSTR 9. So table 6 talks about the bifurcation requirement into input capital goods, input services, RCM, ISD, trans 1, trans 2, and RCM तो हमने बताया. ठीक है, तो ये सारी बाइफर्केशन हमें जनरली बुक से नहीं मिलती है, टैक्स पेयर के बुक से, एसएससी के बुक से ये नहीं मिलती है, तो दिस इज द इशू. बट यस, हम लोग ऐसा सिस्टम एसएससी को बता सकते हैं कि एट द टाइम ऑफ पासिंग द एंट्री, तो उन्होंने वो ही सोर्स से वो बाइफर्केशन करना स्टार्ट कर देना चाहिए. तो एट द टाइम ऑफ फाइलिंग जीएसटीआर 9 और रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के टाइम पे हमें थोड़ा आसानी हो जाएगा, तो वो सिस्टम में ही थोड़ा चेंजेस हो जाएगा, तो ये हमें डिटेल्स आराम से मिल जाएगी. या ऐसा हो सकता है कि हम लेजर से डिफरेंट बना ले कि इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स के तीनों के आईटीसी की लेजर ही अलग प्रिपेयर करवा ले उनसे. नेक्स्ट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट नॉट रिफ्लेक्टिंग इन जीएसटीआर 2A और 2B और 8A. तो ये तो आए दिन सबको प्रॉब्लम आती है कि we are fulfilling with the conditions of all conditions of GSTR section 16, बट एक कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है कि सामने वाले के जीएसटीआर 1 में उसने फाइल नहीं किया, टाइम पे फाइल नहीं किया, और हमारे 2B या 8A में नहीं दिख रहा है, तो वी आर नॉट एबल टू गेट दी आईटीसी. बट यस, उसके लिए एक ही एक रास्ता है कि हमें वेंडर से
लाइक टैक्स पेयर या एसएससी जो भी होगा वो कंटिन्यूअस वेंडर से फॉलो अप लेगा, डिक्लेरेशन लेगा कि उन्होंने टैक्स पेमेंट और जीएसटीआर 1 टाइम पे फाइल करना है. Next is overlapping data in table 6B and 6H. So 6B talks about the ITC availed, normal ITC, and 6H is reclaim of ITC. तो 6B और 6H में कंफ्यूजन होता है कि 6B में क्या डाले और 6H में क्या डाले. तो 6B में हमें नॉर्मली ITC डालना है जो हमने अवेल किया है 3B में. 6H टॉक्स अबाउट दी रिक्लेम ऑफ आईटीसी जो हमने रूल 37 के हिसाब से रिवर्स किया था, और नाउ बिकॉज सामने हमने पेमेंट कर दिया 180 डेज के बाद सप्लायर को, तो नाउ वी कैन रिक्लेम दी आईटीसी. तो दैट इज पार्ट ऑफ 6H एंड नॉट दी 6B. नेक्स्ट इज डिस्क्लोजर ऑफ इनवर्ड आरसीएम लायबिलिटी इन जीएसटीआर 9. सो जो पहले हमने बताया था कि बाइफर्केशन चाहिए आईटीसी में, input service capital goods, same way we need the bifurcation of inward RCM liability in GSTR 9. So the client needs to prepare, needs to make the changes in the system in such a way that we get the inward RCM liability in proper format or in correct format. Next is ineligible ITC availed on GST paid in other states. There can be chances, there could be chances that ineligible ITC was availed. We have faced the issue in one or two of the case that we have claimed, the client has claimed the ITC, that CGST, SGST, but the CGST, SGST was pertaining to some other state because that was pertaining to any services procured for immovable property, like hotel service लिया या event वहाँ पे attend किया. तो अगर कोई और state में अगर event attend किया या hotel service लिया, तो they are going to charge the ITC of they are going to charge CGST, SGST of that respective state, but we are not eligible to claim the ITC of that state. So there are chances कि गलती से ऐसा कोई ITC ले लिया हो, that needs to be identified and that needs to be reversed with along with interest. Next is GSTR 1 or IFF filed after due date or tax liability on the same was not discharged by the supplier. So ये होता है केस जब भी हमें GSTR 1 में तो इनवॉइस दिख गया, तो वी हैव क्लेम दी आईटीसी, बट पता चला कि सामने वाले ने GSTR 3B में वो अमाउंट पे ही नहीं किया. तो डिपार्टमेंट विल कॉल यू कि भाई तुम्हारा ये जो सप्लायर है उन्होंने रिटर्न ही फाइल नहीं किया, 3B ही फाइल नहीं किया. हम बोलेंगे कि हमारे 8A या 2A में दिख रहा है, 2A 2B में दिख रहा है, हमने क्लेम कर लिया है, बट दैट इज नॉट द केस. सेक्शन 16 बोलता है द अमाउंट शुड बी पेड बाय द सप्लायर टू द गवर्नमेंट, अमाउंट ऑफ टैक्स शुड बी पेड बाय द सप्लायर. तो इन दिस केस GSTR 1 में तो फाइल हो गया, बट GSTR 1 इज नथिंग बट द क्रिएशन ऑफ लायबिलिटी डिस्चार्ज करना है तो GSTR 3B तो सप्लायर ने फाइल करना ही पड़ेगा. तो अगर नहीं फाइल किया है तो यू वुड नॉट बी एलिजिबल फॉर क्लेमिंग द ITC. You need to talk to the supplier that the amount should be paid to the government so that repercussions cannot be passed on to you. And there are cases that GSTR 1 are filed by supplier after due date. After due date means नवंबर तक का अभी ड्यू डेट है, ठीक है, नवंबर तक का ड्यू डेट यानी अक्टूबर के रिटर्न में मैक्स टू मैक्स जाना चाहिए, बट लोगों को अभी भी कहीं कहीं पे डिफिकल्टीज है कि नवंबर मतलब नवंबर का रिटर्न, तो नवंबर का रिटर्न नहीं है, नवंबर का रिटर्न दिसंबर में जाएगा. दैट इज नॉट द केस. वी कैन नॉट शो इन नवंबर्स रिटर्न, वी नीड टू शो ऑन और बिफोर अक्टूबर का रिटर्न जो फाइल होगा उसमें या उससे पहले दिखा सकते हैं. तो अगर नवंबर के रिटर्न में दिखाया तो दैट विल बी कंसिडर्ड इन जीएसटी, दैट विल बी कंसिडर्ड दैट रिटर्न वाज फाइल्ड इन दिसंबर, और दिसंबर तो ड्यू डेट तो चला गया, तो हमें आईटीसी नहीं मिलेगा. तो हमें ट्रैक रखना है कि सप्लायर ने GSTR 1 तो फाइल किया है और वो टाइम पे फाइल किया है, और 3B में उन्होंने GST का लायबिलिटी भी डिस्चार्ज किया है करेक्टली. So these are the practical issues in GST input tax credit. We can resolve these issues with pre-planned manner. पहले से अगर बाइफर्केशन का या ITC रिको मंथली बेसिस पे करेंगे तो ये सारी चीजें मिनिमाइज हो सकती है. निल नलीफाई तो नहीं होंगी, वो तो हमें भी पता है, दैट इज नॉट द प्रैक्टिकल
प्रैक्टिकल वो प्रैक्टिकली तो पॉसिबल है ही नहीं, बट ठीक है हम मिनिमाइज कर सकते हैं प्लान कर करके उसको। नेक्स्ट इज मैंने कुछ स्क्रीनशॉट लगाए हुए हैं इसमें नोटिस के, जो हम लोग को ये फेस हुए हैं वो, तो आपके एक रेफरेंस के लिए मैंने लगाया हुआ है ये नोटिस का स्क्रीनशॉट। फर्स्ट इज, जैसे हमने बताया था कि टेबल 8 बी में जो डिफरेंस आता है, ठीक है, ये टेबल यहाँ पे लिखा हुआ है एस बिलो, देयर इज अपेरेंट difference between ITC claimed in GSTR 3B and ITC declared in GSTR 2A or 2B. Clarification along with evidence is required. Otherwise, why proceeding for demand or reversal thereof should not be initiated. तो ये हमने बनाया नहीं है, ये प्रैक्टिकली है, ये ओरिजिनल इनवॉइस का स्नैपशॉट है, तो ये आपके रेफरेंस के लिए हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए GSTR 2A, यानी ये 2A लिखा है पर ये टेबल नंबर 8A से आया है GSTR 9 के। So the amount is showing as 82,000, 82,000 and 1,88,000. But ITC availed is in 6B जो आता है हमारा, ठीक है, या 6A उन्होंने लिया हुआ है, ग्रॉस ही लिया हुआ है, तो ग्रॉस उन्होंने लिया हुआ है 5,86,000. So the difference is 1,15,000, 1,15,000 in CGST, SGST, IGST में माइनर डिफरेंस है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये हमें इसमें पार्टी वाइज रिकंसिलेशन करके इनवॉइस आइडेंटिफाई करने हैं कि इनवॉइस क्यों जीएसटीआर 2A में नहीं आए हैं, और फिर पार्टी से फॉलो अप करना है। और अगर उन्होंने B2CS में वगैरह दिखाया हुआ है तो ये 183 का जो अभी सर्कुलर आया था उसके हिसाब से हम उनसे, अगर 5 लाख से कम है तो सप्लायर से हम डिक्लेरेशन दे सकते हैं कि they have already discharged the liability, and अगर 5 लाख से ज्यादा है तो एक सीए सर्टिफिकेट लगता है, तो सीए सर्टिफिकेट में भी वो मेंशन हो जाएगा based on the verification of the data of the supplier that the supplier has discharged the liability correctly. But yes, there could be chances that he must have shown the uh, invoice under B2CS category, and he must have paid the GST amount. तो इसमें डिपार्टमेंट का कोई रेवेन्यू लॉस नहीं है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सिर्फ आपको डॉक्यूमेंटेशन इसमें सही से करने हैं। और अगर कोई इनवॉइस नहीं दिख रहा है तो that would be the part of litigation. Based on the factual position of the case, we can proceed further. Next is ट्रान 1 ट्रान 2 का क्रेडिट जो लिया हुआ था उसमें वेरिफिकेशन चाहिए, तो डॉक्यूमेंट्स मंगवाते हैं वो लोग ट्रान 1 ट्रान 2 के क्रेडिट अगर आपने लिए हैं तो कौन से बेसिस पे आपने वो क्रेडिट लिया है, या उसके डॉक्यूमेंट्स क्या है, उसके लाइन आइटम्स क्या है, तो वो हमें रेडी रखना होता है। अगर हम कहीं पे भी डेटा पंच करते हैं तो वी नीड टू मेक श्योर दैट वी हैव द डिटेल्स ऑफ एवरी ईच एंड एवरी फिगर्स। तो ट्रान 1 और ट्रान 2 के क्रेडिट अभी तो पॉसिबल नहीं है, पर अगर अगर लोगों ने लिए हुए हैं तो उसका प्रूफ ऑफ वेरिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। Next is Rule 42-43 reversal. As below, ITC has not been reversed as per Rule 42 and 43. Why proceedings for its reversal may not be initiated? Clarification is expected. यहाँ पे अमाउंट्स नहीं है क्योंकि यहाँ पे है नहीं प्रॉब्लम, बट ये कई कई जगह पे प्रॉब्लम्स होती है, जैसे सप्लाई, टोटल सप्लाई में एग्जाम सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई दोनों ही है, तो हमें रूल 42 के हिसाब से रिवर्सल करना होता है, और अगर कैपिटल गुड्स पे हमने आईटीसी ले लिया है तो 43 के हिसाब से फिर रिवर्सल करना होता है। और अगर मंथली रिवर्सल करते हो तो हर मंथ का जो रिवर्सल है वो एनुअली भी हमें चेक करना होता है, या एनुअल टर्नओवर जो बनेगा उसमें एग्जेम्प्ट और टोटल टैक्सेबल टर्नओवर कितना है उसका जो रेशियो बनेगा उसके हिसाब से भी एक रिवर्सल का रेशियो फिक्स करना है। और whichever ITC you have reversed, that needs to be compared with annual ITC to be reversed, or if it is more, if annual ITC to be reversed is more, then additional ITC जो रिवर्स करना बनता है वो आपको GSTR 3B से रिवर्स करना पड़ेगा, और GSTR 3B से भी रिवर्स नहीं किया तो DRC 03 से आपको रिवर्स करना पड़ेगा। और अगर यहाँ पे शॉर्ट पेमेंट है तो इंटरेस्ट के साथ, क्योंकि ITC टू बी रिवर्स्ड इज मोर, एनुअल आईटीसी टू बी रिवर्स्ड इज मोर, तो जो शॉर्ट पेमेंट है उस पे आईटीसी अलोंग विद इंटरेस्ट आपको भरना पड़ेगा। तो मेक श्योर दैट यू गेट टू नो दिस बिफोर वी गेट एनी ASMT और DRC 01A और शोकोज नोटिस, सो पेनल्टी कैन बी
avoided over here. So I would like to thank Women's and Young Members Excellence Committee, and special thanks to Preeti ma'am and Abhay sir for giving me this opportunity of presenting myself and uh, giving my inputs on my understanding of GSTR 9. So I would hand over this to coordinators. Thank you so much, Hiloni ma'am, for the insightful session. It was very knowledgeable, and thank you for your time. As there are no questions, we may end this session. Thank you so much.